Stanza 1. Driving from my parents' home to Cochin, last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. And the possible questions from this stanza can be, where was the poet driving to? Who was sitting beside her? Poet drive करके कहाँ जा रही थी और उनके साथ कौन बैठा था? पोएट ड्राइव करके एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और उनके साथ उनकी माँ बैठी थी. So the poet was driving to the airport and her mother was sitting beside her. Second question, what did the poet notice about her mother? पोएट ने अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस किया? पोएट ने अपनी मदर के बारे में नोटिस किया कि उनका चेहरा बहुत ही बूढ़ा और मुरझाया हुआ लग रहा है और वो बहुत ही बूढ़ी, जितनी बूढ़ी हैं उतनी बूढ़ी दिख रही हैं. और शायद ये उनके लिए एक इंडिकेशन थी कि उनकी मदर अब अपनी लाइफ की लास्ट स्टेजेस में हैं और वो जल्दी ही मर सकती हैं. So the poet noticed about her mother that she looked as old as she was and her face was lifeless and colorless like that of a dead body. That means she noticed that her mother had gone old and she could die any moment. Why did the mother's face look like that of a corpse? Mother का face एक dead body के face जैसा क्यों दिख रहा था? वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि मदर सोई हुई थी और उनका मुंह खुला था और उनके चेहरे पर कोई भी लाइफ या कलर का निशान नहीं था. दैट मीन्स उनके चेहरे पर कोई भी संजीदगी नहीं थी. सो द मदर्स फेस लुक्ड like that of a corpse because the mother was sleeping and her mouth was opened, which resembled to that of a dead body, and it did not have any color or life showing on her face. Stanza 2. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब इसमें से questions जो हमें आ सकते हैं. What did the poet realize? How did she feel? Poet ने क्या realize करा, क्या समझा और उसने कैसा महसूस किया? The poet realized that her mother was as old as she looked. Poet ने ये realize किया कि उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी वो एक्चुअली में थी. दैट मीन्स माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि अब वो किसी भी टाइम मर सकती हैं. वो अपनी लाइफ की काफ़ी एडवांस्ड स्टेजेस में हैं. सो द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर लुक्ड एज ओल्ड एज शी वॉज एंड शी कुड डाई एनी मोमेंट. What did she do then? उसने फिर क्या किया? उसने अपने उस ख्याल को अपने मन से निकालने के लिए बाहर देखना शुरू कर दिया. She started looking out of the window of car. What did she notice in the world or outside? उन्होंने बाहर की दुनिया में क्या नोटिस किया? उन्होंने बाहर की दुनिया में देखा कि पेड़ जो हैं वो उल्टी तरफ दौड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं अपने घरों में से ग्रुप्स में से निकल के आ रहे हैं खेलने के लिए. सो शी नोटिस्ड दैट द वर्ल्ड आउटसाइड was full of life and energy. The trees looked youthful. They seemed to be moving in the opposite direction and happy children were coming out in groups from their houses to play. So she has basically evoked the images of trees and young children to contrast the energy of the youth with the old age. But after the airport's security check,
standing a few yards away. I looked again at her, when pale as a late winter's moon. What did the poet do after the security check? Security check के बाद poet ने क्या किया? Security check के बाद poet ने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा. So the poet looked at her mother's face again after passing the security check, and she was standing a few yards away from her mother. Why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? पोएट ने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया है? उसने इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि लेट विंटर मून भी बहुत ही हेजी मीन्स नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी ब्राइट. वो बहुत ब्राइट या क्लियर मून नहीं होता है, वो पीलेपन पे होता है और ऐसा लग रहा है कि वो अब जल्दी ही बादलों में छिप जाएगा. दैट मीन्स जो माँ का चेहरा था वो भी उतना ही पीला और मुरझाया हुआ था जैसे कि विंटर का चंद्रमा होता है, और इससे ये पता चल रहा था कि उसकी माँ का भी जल्दी ही निधन हो सकता है. So the poet compared her mother's face to a late winter's moon because her mother's face had gone very weak and pale and was very misty and unclear like that of a winter moon. And it was an indication to the poet that the mother was in the last stages of her life and could pass away any time. Stanza 4. And felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. Now what is her childhood fear? उसके बचपन का क्या डर था? उसका बचपन का ये डर था कि वह अपनी माँ से जुदा हो जाएगी, वह अपनी माँ को कहीं खो देगी. So her childhood fear was that she would be separated from her mother. She could lose her mother any time. How do the parting words of the poet and her smile present a contrast to her real feelings? उसके बिछड़ते हुए, parting words means जो बिछोड़े पर वो शब्द बोलती है, उसकी स्माइल और वो शब्द कैसे एक contrast means opposite, उसकी जो असली feelings हैं उनके ऑपोजिट थी. अब वो बोलती है, जब वो बिछड़ रही है अपनी माँ से तो वो बोलती है सी यू सून अम्मा. इट मीन्स मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगी. और वो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है. वो स्माइल जो है वो आर्टिफिशियल है, वो फेक है, क्योंकि वो असलियत में अंदर से बहुत दुखी है. सो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट and the smile that she had put on her face were actually opposite to her real feelings, because she was quite sad to see her mother's face, which had become lifeless and was indicating that she could pass away any time. She was feeling the familiar pain in her heart that she would lose her very soon. But still she said, see you soon, Amma, because she wanted to assure her mother that she would come back very soon. And she put on a smile to hide her feelings of guilt that she could not be with her mother. Now, some more questions that can come in the exam can be, what is the kind of pain and ache that the poet feels? The kind of ache and pain that the poet feels are not something that she has never felt before. They are quite familiar, and she had felt them in her childhood, that she could lose her mother any time. Why are the young trees described as sprinting? Young trees, छोटे छोटे पेड़ों को sprinting means moving. Moving क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जब हमारी कार किसी एक डायरेक्शन में स्पीड से जा रही होती है तो उस टाइम पे अगर हम बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ दूसरी तरफ जा रहे हैं. और ये जो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि पोएट
अपनी माँ के मुरझाए हुए चेहरे को, ओल्ड एज को, ढलती हुई ओल्ड एज को उसके साथ कंट्रास्ट दिखाना चाहती है, उसके साथ कंपेयर करना चाहती है कि जब हम यंग होते हैं तो हम एनर्जी से भरे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यूथफुल लोगों में जोश होता है, लेकिन जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये हमारा जोश जो है वो ढलता चला जाता है. So the young trees have been described as sprinting because trees seem to be moving in the opposite direction when we are traveling at speed, and this image has been evoked to bring out the contrast between the energy of youth and the weakness in old age. Now, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? The poet has brought in the image of merry children spilling out of their homes to bring out the contrast between the energy and zest of youth with the weakness of the old age. Why has the mother been compared to a late winter's moon? मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून के साथ क्यों किया गया है? मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज हर फेस हैड बिकम एज लाइफलेस, कलरलेस एंड पेल एज द लेट winter's moon, which is very hazy and unclear. So these are the signs of decay. What do the parting words of the poet and her smile signify? The parting words of the poet and her smile signify that she is at pain in her heart to notice the advancing age of her mother, and she fears that she might lose her, and she smiles because she wants to hide her feelings of guilt. That's all about the questions on this poem, and I'll be back in my next video on the next chapter. Thank you.